So the way we understand this tunneling in case of particle in a box model, similar thing we can expect to happen, that that tunneling is also observed, or also it does happen in a harmonic oscillator also. It is okay. So what we mean by saying that is that the oscillator, like HCl molecule, if you treat it as a harmonic oscillator, then we were considering Cl as the fixed anchor and H was moving. So beyond a point, so you expect, so what we expect in harmonic oscillator is that the kinetic, when it is moves from its mean position towards the extreme most extreme position जहाँ तक जा सकता है, so kinetic energy gradually decreases and becomes zero at some point. So the point where kinetic energy becomes zero, that is the point classically it will start returning back. So beyond that point, the particle, the hydrogen atom, should not be found. ये forbidden region, classically forbidden region. यहाँ पे जो सेंस बनता है, जो क्लासिकल फिजिक्स आपको बताता है, तो उसको अगर हम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करें, सो इमेजिन HCl मॉलिक्यूल, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ Cl and H moves back and forth around this mean position, compresses and is this. So as it moves away from the mean position, the kinetic energy goes on decreasing, and at a point it becomes zero. Beyond that, so that is the point from where it starts returning back, and so we do not expect the hydrogen atom to be found beyond that point. So after a certain displacement, it should not be found classically. Lekin, so that is the case where potential energy is potential energy is less than the total energy. That's so normally this is जो case अभी classically हमने discuss किया, this is the case when potential energy plus kinetic energy is equal to total energy, right? E T. So what I will need some pages. Okay. So what, क्या मैं ये कह रहा था कि suppose we are talking about एक बार फिर से, so we have Cl, H, this is equilibrium, and so you have stretching and compression occurring. Stretching, so something displacement, it is not to the scale, अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये this is equilibrium, इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ हुआ कि ये नॉर्मली इतना है बॉन्ड लेंथ, स्ट्रेच H यहाँ तक चला गया, सो दिस इज द, थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इधर दिखाते हैं, सो डिस्प्लेस्ड प्लस x, डिस्प्लेस्ड माइनस x, सो ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम. सो देयर इज a point when it is displaced like this, it will reach, कहाँ तक जा सकता है, क्लासिकली जो आप हमने पढ़ा है समझा है, उस पॉइंट तक जाएगा जहाँ तक काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो जाएगी, और उसके बाद वो वापस रिटर्न अपने पाथ पे, रिस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट इन द रिवर्स डायरेक्शन विच इज स्लो इट डाउन एंड फाइनली, सो दिस इज द, सो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट, व्हाट वी कॉल
turning point, this is another turning point. So in the minus x direction there is one turning point, there is plus x direction there is another turning point. स्ट्रिंग झूला भी होता है ना, झूला आप देखते हैं कि एक पेंडुलम के ऊपर गया और पॉइंट के बाद वो नीचे आएगा. So that will happen at the point where kinetic energy becomes 0. So 0 at turning point. So this is a turning point Ke. इसी तरह से कंप्रेशन भी जब हो रहा है तब भी वही चीज होगा, टर्निंग पॉइंट 0. सो दिस इज अनदर टर्निंग पॉइंट. सो एक इधर इस साइड टर्निंग पॉइंट होगा, स्प्रिंग अगर बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, सो यू कैन एक्सपेक्ट इट कि एक यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, एक इधर रहेगा. दो टर्निंग पॉइंट होंगे ना कभी भी, जैसे झूला झूलते तो एक इस साइड होता है, उसी तरह से अगर स्प्रिंग का भी इमेजिन कर रहे हो, सेम थिंग इज हैपनिंग. सो ये हमारा इमेजिनेशन है HCl मॉलिक्यूल. तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम टनलिंग की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि the possibility of there is a finite possibility of the hydrogen atom to be found beyond the point where kinetic energy becomes 0. जो टर्निंग पॉइंट के बियॉन्ड, जो टर्निंग पॉइंट हमने क्लासिकली डिसाइड किया है, उस टर्निंग पॉइंट के बाद भी कुछ परसेंटेज थोड़ा सा और जा सकता है, वो टनलिंग है. So appearance of this hydrogen atom, the presence of this hydrogen atom beyond the turning points on either side, plus x and minus x, that is tunneling. ठीक है. अब यहाँ पे दिक्कत ये, so classically what we have understood, एक important चीज है. So if V and E जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, नॉर्मली इन classically what is happening, so वैसा कैसे हो सकता, क्लासिकली व्हाट वी एक्सपेक्ट, जो काइनेटिक एनर्जी E है, और अगर हम T प्लस V इज E, T इसको हम काइनेटिक कह रहे हैं, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल को अगर हम, उसका सम होता है. So the potential energy is always less than E. हमने अभी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का टिपिकल देखा, जब लेकिन beyond that point, the position that I am talking about, beyond the turning point जहाँ पे हाइड्रोजन होगा, वहाँ पे potential energy will be more than the total energy, more than V will be greater than E. And if the energy is, total energy is constant, then kinetic energy has to be negative. Kinetic energy is negative in that forbidden region. And there is no classical thing like that. So this is classical thing, and so in classically what we are talking about is that the potential energy is always, V is always smaller than E in that region, in the between the two, दोनों टर्निंग पॉइंट के बीच में, जो आपका क्लासिकल जो बचपन से जो झूला देखते आए और अब तक वो सब कर, उस बीच में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन टोटल एनर्जी. और जो बाकी का आप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन से पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी गिव्स यू टोटल एनर्जी. सो इट इज अ पार्ट ऑफ, बट व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन दिस, दैट हैपेंस इन द फॉरबिडन रीजन, there if the total energy is constant, that can be constant only if the kinetic energy is negative. So in the forbidden region, now I'm just rubbing it off to this, quantum mechanically
So classically we have, if this is the turning point, classically also note one more thing what I am saying. Classically, no possibility of H to be found beyond द टर्निंग पॉइंट, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्लासिकली, जो हमारे ऐसा सोच ही नहीं सकते हम कभी. So taking this example like this, but in quantum mechanical calculations it has been found that there is a finite probability that this, if it is oscillator, harmonic oscillator, beyond the turning point also the wave function will be there. So that is what we know as tunneling. In the forbidden region also, where the kinetic energy becomes zero, उस पॉइंट के बियॉन्ड भी. सो देखो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव था, घटता जा रहा है, जीरो हो गया, और उसके बाद और थोड़ा आगे नेगेटिव. मीन it is just that kinetic energy it has some मतलब एनर्जी नेगेटिव है, जस्ट दैट इन द सेंस ये जो कैलकुलेशन हम बता नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का, इट हैज काइनेटिक एनर्जी बट व्हेन यू ऐड द टू इट शुड बी इक्वल, ये जो टोटल एनर्जी के इक्वल आना चाहिए, तो इसीलिए वो नेगेटिव रखा गया है. इट विल टेक्स टाइम टू एब्जॉर्ब, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. और ये है नहीं, दिस इज I'll share some more videos on that to get inside the head, to get it inside. So but basic idea ये जो tunneling इसमें हम बात कर रहे हैं कि beyond this point it will be found, and that is the point. So classically there is no possibility of it being found out, but in quantum mechanical thing in quantum mechanics you have finite probability of H found beyond turning point. So this is tunneling, and here the kinetic energy V is greater than E, and to make the energy constant, this and kinetic energy which we represent by T, if I write T is negative. Kinetic energy is negative. V is greater than E, and kinetic energy is negative in this region. So this so now, so let me just rub it off. So okay, so this statement I will come back to it later. For the first, it has been calculated that for V is equal to 0 state, there is 8% chance that it will be found beyond this, the
turning point on plus x direction, 8% chance that it will find beyond. So this is a calculation which can be shown later. So I will come back to this statement later. So classical mechanics, what we already know, x tp. So x, the displacement tp is for turning point. So words should be clear. Just symbols लिखा गया है ना. x displacement at the turning point, जहाँ से वो वापस आना शुरू हो जाएगा. Turning point. So when the kinetic energy becomes zero, that is the turning point. That's how we define it. And the potential energy half kx square. So its total energy is E equally. So equality holds, and you have this half x or x square. So you can roughly get the idea where the turning point will appear. Simply उसको कीजिए कि turning point कहाँ पे होगा. क्या हुआ? वो 4000 और 10 मिनट के लिए क्या आरपीएम 4000 और 10 मिनट के लिए 4000 सर्किल. हाँ 4000 पे भी हो जाएगा. 4000 पे तक बैलेंस करके रखना. 10 मिनट ठीक है. सो इस तरह से आपको एक चीज ये भी पता चल रहा है यहाँ पे, हाउ टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट. सो इक्वेट दैट थिंग, काइनेटिक एनर्जी, पूरा का पूरा पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा मतलब टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. सो इक्वेट दैट, यू गेट दिस पॉइंट. टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये एक और चीज आप सीख रहे हैं अभी, टर्निंग पॉइंट कैसे पता करेंगे किसी भी सिस्टम में. Or xtp can be found through this v plus half and this. So beyond these points, what is the possibility that it can be stressed? What is the probability of it being stressed beyond the displacement? And that is what we try to find, probability. So this is what we do in when we work out turning. What is the probability of being found on that side in the forbidden region between the turning point and infinity. टर्निंग पॉइंट एंड इन्फिनिटी के बीच में कितने डिस्प्लेसमेंट तक कहाँ तक वो पाया जा सकता है. ओके, सो दैट प्रोबेबिलिटी यू हैव टू सी द, सो द इंटीग्रेशन हैज टू बी डन बिटवीन एक्स टी पी, लिमिट्स, सी द लिमिट्स, एक्स टी पी टर्निंग पॉइंट से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहाँ पे. सो दैट इज, दिस इज गिविंग यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ऑसिलेटर between the points. So so this integration is best expressed in this with this so we can write the wave function. We already know the expression for the wave functions in terms of Hermite polynomial, Gaussian function, and alpha we have defined the factor which was there, and so we can write it in another way. The same equation x and y जैसे पहले था उसमें हम rearrange करके अल्फा के टर्म्स में we can write the y turning point, the value of y at the turning point, which is x by alpha, and so you will have 2e by alpha square by k. So here you are taking into account the mass and the k, the wave number, the wave vector. Okay, so mass and so all these things. So we are defining the turning point now in terms of total energy k and alpha, which involves mass. So ytp, you can so putting in the value of energy v plus half h cross, you can further get this value. So this is the final expression. This shows that yeah, further simplification. So finally in a simplified expression, so सबसे simple expression जो आया हमारा turning point के लिए, ytp is equal to under root 2v plus 1. v is the quantum number. Okay, so it is independent of particle speed. So the turning point is not dependent on k or m. Finally आप हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं. We are reaching a point where there is nothing like m or k something. So the mass of the oscillator doesn't matter.
It is independent of the mass, independent of k, only under root 2e plus 1 turning point निकल गया, ठीक है. So turning point will be different. So as v increases, if you are higher vibrational quantum number, so you will have greater, ज़्यादा दूर तक जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा. So for the state of the lowest energy v is equal to 0, उसके लिए हम कैलकुलेट करें अगर वी टी पी, सो 2v, v is 0, so 1 आएगा, वो तो दिख ही रहा है, y t p will be 1, and then you can try to evaluate, आप पूरा फॉर्मूले में डाल के उसके लिए प्रोबेबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है निकाल सकते हो. So in this case, this is the kind of function that you will get, and if the calculations are done, there is something called error function which is defined for this particular case. इसमें, so error function is a mathematical term again, equation that is, उसको मॉडिफाई करके इसमें इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं z, और इसके लिए ये मैनुअली आप सॉल्व नहीं कर सकते, मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस के थ्रू सॉल्व होता है. This integration, the integral that I am telling you is slightly difficult to solve, and it can be solved using this error function which is related to this thing. So special case of this, because the probability integral that you are seeing is a special case of a mathematical expression, error functions, ERF, which is represented over here. And then probability becomes, so if represented in this form, it gets simplified. The probability is simply like this, table is given and you can get the value. So for the first, in the lowest energy state, the probability comes out to be 0.08, that is 8%. और ये जो अब v जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाए, 8% ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 8% ही है, वो फर्दर कम होकर 5, 6, और जैसे आप हाईएस्ट क्वांटम नंबर इन्फिनिटी तक जाएंगे तो 0 हो जाएगा. सो द टनलिंग गोज ऑन डिक्रीजिंग, द टनलिंग will go on decreasing as the quantum number increases. So lowest quantum state में ही maximum probability है, maximum tunneling हो सकता है, उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर में कम होता जाता है. So that means 8% stretched more than the turning point आप कर सकते हैं. So total, so this is v is equal to 0, stretched beyond the classical limit, the possibility is 8%. So 8% compression, 8% एक्सटेंशन, जो स्ट्रेचिंग, दोनों में 8% का आप कर सकते हैं. टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ, so total probability is 16%. 16% is the total probability because compression के लिए भी होगा, turning point is on either side. So 8% plus 8% is 16% is the probability of finding the oscillator in the forbidden region, stretched or compressed, both. Similar calculation if done for v is equal to 6, it has been found to be 7%, and so tunneling is what we now know is independent of force constant, independent of k, independent of mass. मैंने वहाँ पे k को वेव वेक्टर बोला था, वो गलत बोला था, फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पे इस केस में, क्योंकि हम ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं. हाँ, ओके. So independent of the force constant and independent of the mass, and as we have seen, it will fall off very quickly with increasing v and becomes 0 when you reach infinity. V is equal to infinity, this will become 0, which is correspondence principle, which is true. Correspondence principle ये कहता है ना, हाई क्वांटम नंबर पे वही रिजल्ट जो आप क्लासिकली एक्सपेक्ट करते हैं वही आ जाता है. सो आगे क्लासिकल फिजिक्स तो वही स्विंग झूले का जो नॉर्मल है वो आपको आ गया कि अब उसमें कोई नहीं दिखेगा बियॉन्ड द टर्निंग पॉइंट्स. सो मैक्रोस्कोपिक ऑसिलेटर्स,
the spring, oscillating spring that you see, the swing in the park, all those pendulums, anything that you can think of, they represent that high quantum number state where the probability of tunneling is 0. But when you talk of molecules, they do have, in the ground state, they have finite probability. As we can see, simple calculation shows that 8% is a possibility. Okay, okay, so that's all for vibrational. Okay, वाइब्रेशनल खत्म, नेक्स्ट वीक रोटेशनल शुरू करेंगे। और ये सब आपको सॉल्व करना है, जो कुछ स्लाइड में है सब करते रहिए और सबमिट कीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए रेड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगेगा, ये आप करेंगे, बाद में करेंगे। रेड्यूस मास में रोटेशनल में पहला जो टर्म इंट्रोड्यूस होगा रेड्यूस मास ही इंट्रोड्यूस होगा। सो आई कैन जस्ट